Hello students. Now in the accountancy, today I'll start chapter number 4, that is analysis of financial statement. Now first of all, let me tell you that which points are not included and which is omitted in our syllabus for this year, that is point number 3, 4, 5, then 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, and from the exercise which sums are omitted, that is sum number 8, 10, 11, 12, 13, 14, and from illustration number 9 to 20, illustration number 9 to 20, and from the exercise sum number 8, 10, 11, 12, 13, 14. These sums are omitted from the syllabus for this year, right? So don't solve this sum and don't do these sums. Now let's see directly the meaning of financial statement. The final meaning of financial statement means the objectives of preparing the First of all, financial statement means the statement which shows the financial position of the business for each and every section, that is called as financial statement, right? Each and everyone can be able to see and can be able to understand by this financial statement, that is called as financial statement. अगर कोई देखता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी एक सेक्शन देखे, फॉर एग्जांपल सेल्स देख रहा है कि सेल्स में पिछले साल कितना इंक्रीज डिक्रीज़ हुआ, ये साल कितना इंक्रीज डिक्रीज़ हुआ, तो वो प्रॉपरली उसको मीन्स देख सके, प्रॉपरली वो समझ सके. सो that kind of preparation is called as financial statement, right? Now this we prepare for the understanding and for the knowledge of the other people only. So the meaning of financial statement is the objectives of preparing the financial statement as predetermined. फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें जो डेटा दिया है उसको ही प्रेजेंट करना है. उसमें इंक्रीज डिक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हुआ, बस यही सॉल्व करना है. बट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर रीअरेंजिंग इन अ सच अ वे दैट दे बिकम कंपेरेबल. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लास्ट ईयर और करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का डेटा हम प्रेजेंट करते हैं, सो दैट पीपल कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड दैट कि हाउ मच इट इज़ इंक्रीज्ड, हाउ मच इट इज़ डिक्रीज्ड. So that is the purpose of preparing financial statement. The different stakeholders take their decision on the basis of financial statement which are prepared in a comparable form. This entire process is known as analysis, right? वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के अदर पीपल भी अपना जजमेंट लगा सकते हैं, राइट? उनको भी यूजेबल हो सकता है फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, राइट? ओके. The types of financial statement. There are mainly three types of financial statement on the basis of stakeholders, horizontal, vertical form, on the basis of duration. हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ही हम फॉलो करेंगे. Now this financial statement can be prepared by two methods, that is comparative statement and common size statement. Common size statement is not in our syllabus for this year, so we have to learn only comparative statement. In the comparative statement we have to prepare profit and loss statement and balance sheet. दोनों का specimen already सम में chapter में दे दिया है. You just have to learn that specimen only. Now what is comparative statement? Comparative statement means we are comparing previous year and current year's data to know the increasing and decreasing form. That is called as comparative statement. Now see here, proper definition is given, proper definition or meaning is given. The financial information of at least 2 years is required for comparison process. The development details of predetermined period is obtained through comparison. It can be known that which period shows good results and which shows weak result. कंपेरेटिव में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का डेटा हम रिकॉर्ड करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाएंगे, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज दिखाएंगे,
राइट. सो पीपल कैन इजीली नो दैट कि इसमें कौन से सेक्शन में कितना इंक्रीज हो रहा है, कौन से सेक्शन में कितना डिक्रीज हो रहा है. ओनली वी हैव टू learn comparative statement only because common size statement is not in our syllabus for this year. Now on page number 166, whenever in the sum, if it is given that prepare profit and loss statement for comparative method, so at that time we have to follow this statement. ये देखो, एक तो पहले पर्टिकुलर ये लर्न ही कर लेना है. देन नोट नंबर इफ इट इज़ गिवन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज डिक्रीज एंड इंक्रीज डिक्रीज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज है. तो ये आपको P&L स्टेटमेंट फॉर कंपैरेटिव मेथड के लिए ये लर्न करना है. और एंड ऑन पेज नंबर 173 बैलेंस शीट फॉर कंपैरेटिव मेथड दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 173. उसमें भी दे देखो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट एंड इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, राइट. तो ये है फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट. ये मोर और लेस हमने जो चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट में हमने जो लर्न किया है मोर और लेस सेम, राइट. देयर इज no more change is given in this statement. More or less both are same, right. So for today, your today's homework is learn this both of this statement properly. You just have to learn this only because ये तो आपको पता चल ही जाएगा आगे. प्रीवियस ईयर का डेटा सब में दे दिया होगा, करंट ईयर का डेटा ये भी सब में दे दिया होगा. हमें सिर्फ ये दो ही फाइंड करने हैं एंड आपको ये स्टेटमेंट लर्न करना है, ये पर्टिकुलर सारे लर्न करने हैं, राइट. So your today's homework is learn both of these statements. So we'll start sums of this comparative statement from tomorrow, right. Okay, so good day everyone.